Hello everyone, welcome to Bilaspur IS Academy, and this is your next lecture for your Indian geography, where I have already started with the Himalayas as such, and I have talked about the various sections of Himalayas earlier. Now I will give you the significance and also the features of various features and significance of Himalayas. But again, before starting lecture, I will give you the quick reminder. This is the last demo lecture for your Indian geography for your English medium. So those who want to register, please you can register as early as you can. We have already given you the number, so please call in that particular number, or also I have mentioned the number in our description box. So those who want to register, please register early. This is the last lecture for your Indian geography as such your demo lecture is concerned. So today I will talk about the other section of your Himalayas, where I will talk about 2-3 things. First is the features of Himalayas. So I will talk about the features, various features of Himalayas and its significance. Okay? So I will talk about the features and significance. So in the last lecture we have seen, I will give you a quick brief on that particular things. So we have seen the north-south division of Himalayas, north and south division of Himalayas. Okay, and also we have seen the origin of Himalayas, how Himalayas is formed. So we have seen the origin. We have seen the north and south division, and also we have seen the east and your west division. So west to east division and east or west division. So in the north south we have 4 parts of the Himalayas. The above one is called your Trans Himalayas. Below Trans Himalayas we have your Greater Himalayas. Below Greater Himalayas we have your Middle Himalayas, and at the last we have Shivalik Himalayas. So these are the 4 parts of Himalayas, where I have talked about the various mountain ranges, and I also detail how this particular Himalayas are formed. Okay, so in the Trans Himalayas we have seen the 4 ranges, including your Karakoram range, Ladakh range, Janskar range, and also your Kailash range. In this particular Greater Himalayas we have seen a continuous mountain chain extending from your northwest towards the northeast, and then turning towards the Purvanchal hills into the Arakan Yoma and Pegu Yoma in your Myanmar and Thailand, and then finally culminated into the Andaman and Nicobar Islands. So that is all about your Greater Himalayas. Now I also talked about the Middle Himalayas, how the pressure or the intense pressure led to the formation or deformation of the complete mountain into a series of ranges, including your Pir Panjal, Dhauladhar, Mahabharat range, Nag Tibba. Okay, and that particular Himalayas are not, that particular Middle Himalayas is not seen before after your that particular things called Bengal Dwar. So Bengal Dwar के बाद आपका Middle Himalayas absent था. Below that we have the ranges of your Middle Himalayas, and talking about the Shivalik Himalayas. So in the Shivalik we have talked about how that particular Shivalik is of your fluvial origin. These are your these 3 are of your marine origin. Shivalik is of your fluvial origin, and post Shivalik we have seen also the Dafla, Abor, Miri, Mishmi, and also some of the mountain ranges called your Regma and Barel. So we have talked about that particular Shivalik as such, how this particular Shivalik is formed, which all mountain ranges or the mountains are present in this particular Shivalik, and everything about this particular north-south division. Then finally we move toward the east-west division or the west to east division. We will talk about the Kashmir and Punjab Himalayas. We talked about this particular called as your Kumaon Himalayas or Himachal Himalayas as such, and after that we have also talked about the Nepal Himalayas and the Assam Himalayas. So we have already discussed till this particular point. So all in all, if you see this particular thing in totality, from here to here we have seen the complete Himalayan mountains, how the Himalayan mountain look like, and what are the various parts and the features, various parts associated with the particular Himalayas. Now we'll talk about some of the important features of Himalayas. Okay, so first of all we'll deal with the features of Himalaya, what all features we are seeing in this particular our Himalayas mountain. Okay, so first of all I'll start with some of the important features, which are number 1, we have this 4-5 features in this particular Himalayas. So number 1 is your Syntaxial Band. Number 1 is your Syntaxial Band. We'll talk about this particular Syntaxial Band in Himalayas. Then we'll talk about various type of folds that occurred in your Middle Himalayas. So we'll talk about the various folds which include your recumbent fold. There is a fold called recumbent fold. There is other fold called as your occluded fold. Occluded fold. There is one more fold called your Nappy Structure. So one is your Nappy Structure. We'll talk about all this thing. So we'll talk about recumbent, occluded, Nappy Structure, and also the overturned fold. I'll give you all this thing कि ये क्या है. So first of all we'll mention here overturned fold.
So I will talk about all these features. So a syntaxial band, various type of folds including these folds. Then we'll move towards and talk about the third important aspect about this particular Himalayas, which is called is your crustal of doubling effect, which led to the greatest height of that particular Himalayas. तो Himalayas का जो आप height देख रहे हैं वो height इतना ज़्यादा क्यों होता है? Why? Because of the first thing, there is a present upliftment, but again there is a one more theory or one more phenomena behind the upliftment or the height of Himalayas, which is called as your crustal of doubling effect. So we will talk about the crustal of doubling effect. Crustal of doubling effect. Okay, so we'll see this all features. There are more features we can talk about in terms of their sectional orientation. So we'll see some of the important wildlife and all. So we'll talk that in particular your significance part, but you can write that here in also your some of the features part. Okay, so these are mostly associated with the various mountains or various Himalayas, and also we'll see some of the faults. So we'll see this particular faults and also some of the faults. So we'll see the fold and faults of the Himalayas mountains. Okay, so in terms of fold we have your Indo-Sangpo suture zone. Okay, so first of all we will have Indo-Sangpo suture zone. I'll talk about this particular suture zone as well, where the mountains are get faulted. So आपका क्या है? Indo-Sangpo suture zone. Then we have your Himalayan frontal fault. Then we have your Himalayan boundary fault. Okay, so we'll talk about this particular things: Himalayan frontal fault, Himalayan boundary fault, main crustal thrust. There is a MCT, MBT, HFF or ITSZ. So these all are the important features of Himalayas. So हम लोग इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, because somewhere once you are writing that particular question on the Himalayas, you will need this particular thing as such if you are talking about the geography. और other way around you can फिर then क्या होगा, सारे के सारे लोग वही normal चीज़ लिख कर आ जाते हैं, where the examiners will not give you the marks. So some of these particular things are important once while you are reading your or talking about the Himalayan mountain as such. So we'll talk about this Syntaxial band, this all folds, we'll talk about the various folds and also the crustal of doubling effect. So I will start with the Syntaxial band first. I will explain here, and again for that particular write-ups I will give you the notes, तो वहाँ पर आपको write-up मिल जाएगा. Please understand these things. So first of all we'll talk about this particular Syntaxial band. So if you look into this particular greater Himalayas, if you talk about the greater Himalayas, so somewhere here in the greater Himalayas are quick map like this particular. So here we have your Nanga Parvat. So this is the Nanga Parvat, and on that particular side, suppose here, so this particular is your Namcha Barwa. Okay, so this is your Namcha Barwa. So from this particular Nanga Parvat, the Himalayas look like this particular thing. So in both the part here and in this particular here, so you'll see the mountains will take something like this particular hairpin band. So these are the some of the bands. So these are the hairpin shaped like band in the Himalayas और in the greater Himalayas. आपके कहाँ कहाँ पर? एट योर नंगा पर्वत एंड योर नामचा पर्वत. सो दिस पर्टिकुलर बैंड, ये जो बैंड हो रहा है, दिस बैंड इज कॉल्ड एज योर सिंटैक्सियल बैंड एंड इट इज फाउंड मेनली इन योर ग्रेटर हिमालयस. सो वी कैन, so please remember this particular thing, there is a syntaxial band in Himalayas. Sometimes in the PSC prelims as well, in most of this particular, not on the CGPSC but in the other state we have seen or I have seen this particular, क्योंकि CGPSC में आपका ज्योग्राफी को इस तरह से लाया नहीं गया था अभी तक. From this particular year or the last year, once we have the geography in your mains, so now they will ask you a question on this particular as well. ठीक है, तो in some of the PSC like in the Uttar Pradesh PCS, they have asked this particular question. Syntaxial band is associated with which of the following Himalayas? So it is your greater Himalayas. Now we'll talk about this particular middle Himalayas and its features, including your various faults. So recumbent, occluded, overturned and nappy structure. See, in this particular thing, because of the intense pressure,
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मिडिल हिमालय, उस समय क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, दोनों प्लेट बहुत ज़्यादा पास आ गए थे. दिस इज द योर इंडियन प्लेट एंड दिस इज योर यूरेशियन प्लेट. बोथ प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोज होने के कारण क्या हो रहा था, आपका जो तैथिस सेडिमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या हो रहा था, फोर्स, इंटेंस प्रेशर था. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द इंटेंस फोर्स एंड इंटेंस प्रेशर दैट माउंटेन टर्न इनटू द सीरीज ऑफ रेंजेस रेदर देन अ बिग एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन. तो आपका क्या हो गया था, पूरा का पूरा माउंटेन क्या है, एक लंबा नहीं बनकर वो क्या होता है, डिफरेंट रेंजेस में फॉर्म हुआ था. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी और द योर कंप्रेसिव फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंप्रेसिव फोर्स, सम ऑफ द माउंटेन्स, if you see, so these are the mountain ranges. If you see this, mountain ranges look like this particular, but in the middle Himalayas if you go, you will see your mountains is like something like this. So this particular structure, if you see this, so it get deformed into a shape like this particular. Then you will see from here only there is a other mountain like this. So it will, if you look like that particular mountain, वो एकदम आपको क्या होगा, प्रॉपर जो माउंटेन का आप शेप देखते हैं वो नहीं दिखेगा, कुछ इस तरह से उसके शेप दिखेंगे. समटाइम इट विल लुक लाइक दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग और अदर वे राउंड. सी दिस इज द माउंटेन. इनिशियली यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, सो माउंटेन विल टर्न इनटू लाइक दिस. सो फर्स्ट हियर, फिर इट विल लुक लाइक दिस. थर्ड में क्या होगा, ये और थोड़ा सा ज़्यादा झुक जाएगा एंड झुकने के बाद क्या होगा, इट विल लुक लाइक दिस पर्टिकुलर. ओके. एंड एट सम पार्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से कट जाएगा एंड इफ़ यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिगर. सो आई विल ड्रॉ हियर, शायद आपको वहाँ से दिख नहीं रहा होगा. सो वो क्या होगा, पूरा कट कर इट विल टर्न लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके. सो दिस लास्ट वन जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये माउंटेन ही है पर ये कट गया है. सो दिस इज कॉल्ड एज योर नेपे स्ट्रक्चर. ओके. सो दिस इज योर नेपे स्ट्रक्चर. दिस पर्टिकुलर द फर्स्ट टाइप ऑफ फोल्ड, दिस इज कॉल्ड एज योर रिकम्बेंट फोल्ड. जहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इफ दिस इज द माउंटेन इट विल रिकम्ब लाइक दिस. सो इट इज़ अ रिकम्बेंट फोल्ड. देन आफ्टर रिकम्बेंट फोल्ड वी हैव द ऑक्यूलेटेड फोल्ड. सो क्या हो रहा है, रिकम्बेंट में वो क्या हो रहा है, इस तरह से मूव हो रहा है, ऑक्यूलेटेड में क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर इज द रिकम्बेंट फोल्ड एंड आफ्टर रिकम्बेंट इफ इट फोल्ड इज फर्दर एंड इट इज कॉल्ड एज योर ओवरटर्न फोल्ड. तो ये अगर फोल्ड और ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, ओवरटर्न फोल्ड होगा. एंड इफ दिस पर्टिकुलर फोल्ड इज नॉट इन दिस पर्टिकुलर राइट एंड ऐसा होकर वो क्या हो रहा है, फोल्ड अगर वो इधर हो रहा है उल्टे साइड में, तो दैट फोल्ड इज कॉल्ड एज योर ऑक्यूलेटेड फोल्ड एंड वन मोर इज योर नेपे स्ट्रक्चर. See this particular things you will required for your answer writing parts. Once you will talk about the middle Himalayas as such, your Himalayas as such, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ताकि आपको कुछ फीचर्स पता हो एंड यू कैन राइट दैट फीचर्स in your answers. And also some of the question may be this particular type of question will come in your objective types as well. ठीक है. So we have the recumbent fold, first one. We have the occultated fold, that's particular. Overturn fold will be like this particular in this direction. And we have the nappy structure जो आपका छोटा सा कट कर ये लास्ट बन गया. This is called as your nappy structure. So we have the various folds in this particular middle Himalayas. So आपका क्या है, features including Syntaxial Band we have understand the various folds of this particular mountain. Now we'll talk about this particular crustal of doubling effect. What is this crustal of doubling effect and how this particular crustal of doubling effect led to the formation of highest of the ranges. और जब आपका देखेंगे तो highest of the peak of the world, अगर वर्ल्ड के सारे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो शुरू के 10 को, अगर शुरू के 10 पीक्स देखेंगे तो 7-8 तो आपके क्या हैं, आपके हिमालय में ही देखने को मिल जाएंगे. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम योर माउंट अकंकागुआ इन योर साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो सम ऑफ इन योर रॉकीज एंड योर एंडीज माउंटेन. तो अगर उनको हटा दिया जाए तो मोस्टली आपके क्या हो रहे हैं, सारे के सारे आपको हिमालयाज में ही देखने को मिलेंगे. ओके. सो विल नाउ सी अबाउट द क्रिस्टल ऑफ डबलिंग इफेक्ट. सी व्हाट हैपेंस during the formation of Himalayas. And even now if this is your Eurasian plate, this is the Eurasian plate, so Indian plate is beneath your Eurasian plate. So Indian plate is here and this is the Eurasian plate and here is your Himalayas mountain formation. Okay. So with time क्या हो रहा है, इसमें एक movement चल रहा है. If you see this particular thing, Eurasian plate और Indian plate, so initially Indian plate was like this, वो यहाँ पर से attached था, but then Indian plate is moving इन लाइक दिस. इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है. ओके. एंड गोज बीनीथ दिस पर्टिकुलर. तो क्या हो रहा है, एक तो वो उस तरफ मूव भी कर रहा है, एक तो उस तरफ मूव कर रहा है और उसके नीचे भी जा रहा है. ठीक है. सो इंडियन प्लेट यहाँ तो हिमालयस है, तो ये क्या हो रहा है, प्लेट ऐसा मूव भी हो रहा है और वो उसके नीचे भी जा रहा है. तो उसके कारण क्या हो रहा है, इफ दिस टू प्लेट्स, इफ दिस इज द, सो दिस, इफ दिस इज द योर दिस पर्टिकुलर above one, if this is the Eurasian plate and this is the Indian plate, if these are the two plates and this particular Eurasian plate, इसके नीचे क्या हो रहा है, ये इंडियन प्लेट इट्स गोज बीनीथ
ये इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है। तो विद टाइम वंस इंडियन प्लेट इज गोइंग बीनीथ, तो नीचे तो जा रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इट विल टेक अ हल्का सा टर्न भी ले रहा है। तो ठीक है, वो जाने के बाद क्या हो रहा है, वो टर्न भी हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ये एंड ये, so see this particular, again I am showing this particular hand, please see this particular hand, this particular initially it is like this, this plate is going beneath and then it will take a turn like this. So because of this type of turn, इसका जो हाइट है वो क्या हो रहा है, हल्का सा ज़्यादा हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट टर्न हाइट इंक्रीजेज, एंड ऑल्सो वी हैव द टू क्रस्ट ओवर विच द हिमालयस इट फॉर्म। तो अगर हिमालय को देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, एक क्रस्ट क्योंकि उसके बीनीथ चला गया, नीचे चला गया है। सो वी हैव बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टू टाइप ऑफ क्रस्टल मूवमेंट, आपका दोनों के दोनों क्रस्ट में क्या हो रहा है, ये क्रस्ट नीचे जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ नीचे जाने के कारण ये क्या हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ बोथ द क्रस्ट इज मूविंग। सो आपका क्या हो रहा है, हिमालयस रेदर देन बीइंग इन द वन क्रस्ट, और यहाँ पर फॉर्म होने के कारण वो दोनों के दोनों से हाइट गेन कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइट गेन दिस पर्टिकुलर हिमालयस हैज सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड वो हाइट जो गेन कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टल ऑफ डबलिंग इफेक्ट। ओके, आई हैव गिवन यू दैट पर्टिकुलर इन राइटिंग, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हियर ताकि आपको फीचर्स समझ आए। फीचर्स आई कांट गिव यू इन द राइटिंग हियर, ऐसे आपको डिक्टेशन पार्ट होगा नहीं, बिकॉज वी आर इन द ऑनलाइन मोड। अगर आप ऑफलाइन होते तो आई एम गोइंग यू द गिव यू द डिक्टेशन एज वेल, बट आपका क्या होगा, ये चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज योर क्रिस्टल ऑफ डबलिंग इफेक्ट। नाउ आई विल टॉक अबाउट द वेरियस फॉल्ट्स, एंड दिस पर्टिकुलर फॉल्ट्स टाइम एंड अगेन PSC और अदर एग्जाम्स आस्क दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आपका सिंटैक्सियल बैंड, और ये भले कि आपको खुद पता होना चाहिए फॉर द मेंस एज वेल, नॉट इन द प्रीलिम्स, अगर नहीं भी आता तो चल जाता है, बट दिस पर्टिकुलर थिंग्स ये तो आपका प्रीलिम्स में सब कहीं भी देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So we'll see this particular faults, and for seeing this particular fault I need all these things. So first of all I will rub this particular thing and I will show you the various faults, और ये faults बहुत important है, please remember all these faults are very much important for you. So again I will draw a small map of India. So a map like this we will draw. Okay, so this is your Indian map, and in India we have seen here this particular section I am just drawing like this. So Karakoram, Janskar, Ladakh and all. So and this particular is your Greater Himalayas. Okay, so these are the parts of Himalayas. These are the Greater Himalayas ranges. Below Greater Himalayas we have seen, we have Pir Panjal like this. So we have this particular, and then we have your Shivalik Mountain. Okay, and there is a Dafla, Abor, Miri, Mishmi. We have Regma, Barel and all these particular mountains. So these are your Trans Himalayas, this is the Greater Himalayas, Middle Himalayas, and these are the Shivalik. तो हमने ये देखा था कि ये चारों माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, वी हैव सीन ऑलरेडी इन द लास्ट सेक्शन। बट इफ़ यू सी द टॉप व्यू, ये क्या था, ये तो हम लोग आपको उसको मैप के ऊपर प्रोजेक्ट करके देख रहे हैं। बट इफ़ दिस पर्टिकुलर इज द माउंटेन, अगर ये माउंटेन और हम उसको ऊपर से देखें, इफ़ यू गो इन द आपके हेलीकॉप्टर से ऊपर जाके, इफ़ यू सी द टॉप व्यू, अगर इसी का मैं अगर आपका टॉप व्यू बनाता हूँ, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम योर sky, so the top view projection of this particular Himalayas would look like this, and as such of India, अगर इंडिया का भी हम अगर पूरा का पूरा टॉप व्यू प्रोजेक्शन करेंगे, so how that particular India will look like, this particular section ये आपका क्या है, this is the Tibet plateau. Okay, so these are the Tibet plateaus. So if we talk about the top view, so this is your Tibet plateau. So now I'll draw your top view projection of this particular thing. Okay, so सबसे पहले आपको समझना होगा इस चीज़ को. So here somewhere here I'll rub this particular thing. आपका साइड का the much I'll required I'll draw, other way around आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं. Okay, so now we'll draw here the top view of this particular Himalayas. So first of all here we have your Tibet plateau. We'll see something like this. Here is your Tibet plateau. Okay, after Tibet plateau we will see this particular Trans Himalayas. So again after Tibet plateau we'll have this particular type of things called as your, this is your Trans Himalayas. Okay, so Tibet plateau, then we have the Trans Himalayas. After Trans Himalayas we have the Greater Himalayas, and the greatest of the peaks are in this particular range. So here we have your Greater Himalayas like this. This is the projection of your Greater Himalayas. So this is your Greater Himalayas. Okay, Greater Himalayas. After Greater Himalayas we will see here somewhere here
इज योर मिडिल हिमालयस। तो मिडिल हिमालयस लुक लाइक दिस पर्टिकुलर, आपका क्या है वहाँ पर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। सो वी हैव द ब्रोकन चेन्स ऑफ माउंटेन, दिस आर द मिडिल हिमालयस। एंड आफ्टर मिडिल हिमालयस इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर मिडिल हिमालयस लाइक दिस, यहाँ पर क्या है ब्रोकन माउंटेन्स है ना। सो दिस आर द मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालय, okay, so this is middle Himalaya. And after middle Himalaya if you see this particular section you will have again the mountain ranges और ऐसा एक complete mountain series दिखेगा. This is called your Shivalik Mountain. Okay, so these are the Shivalik Mountain. All in all एक छोटा सा यहाँ पर भी अलग से बना लेते हैं so that you can understand it better. So this is your Tibet Plateau. Post Tibet we have your Trans Himalayas. Post Trans Himalayas we have your Greater Himalayas. After Greater Himalayas we have the series like this particular 1 and 2. These are the middle Himalayas. And post middle Himalayas we again have your Shivalik Himalayas. So these are the particular section. But again if you see अगर इन सारे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, these are not the continuous. तो आपको क्या है कहीं ना कहीं क्या है बीच में ब्रेक्स हैं. So there is a one mountain, then there is a हल्का सा ब्रेक है छोटा सा, there is a break, then again a second mountain. So this particular plateau here is a break, then this particular things. तो अगर देखा जाए so we have this particular things called faults. Okay, तो आपका यहाँ पर क्या है कुछ इस तरह से बीच में gaps हैं. Okay, so we have this particular gaps. Again I am drawing in this particular as well. 1 2 3 and 4 this particular. What happens, हुआ क्या था, इफ़ यू सी पर्टिकुलरली आपका जो बिजली का खंभा भी देखने को मिलता होगा. सो इन दैट पर्टिकुलर बिजली का खंभा आपका क्या होता है कुछ इस तरह से 3 लाइन होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर से क्या होता है आपके पूरी वायरिंग होती है कुछ इस तरह से होती है. सो वाई दिस पर्टिकुलर हैव योर 3 लाइन्स और 4 लाइन्स, बिकॉज द एंटायर मास जितना भी इसका वेट है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का, वो वेट कहाँ होगा उसके सेंटर पे लाई करता है. ठीक है, सो वेट कहाँ होता है, अगर हमने स्ट्रक्चर लगाया तो उसके बिल्कुल सेंटर पे होगा. ठीक है, तब आपका क्या होता है वेट बिल्कुल सेंटर पे है. बट इट वॉज वेरी सरप्राइज टू सी वन जॉर्ज सिडनी पर्टिकुलरली. तो आपके जो क्या है आपके सॉरी नॉट जॉर्ज सिडनी, जॉर्ज एवरेस्ट, द वन हु फाउंडेड द माउंट एवरेस्ट. तो जॉर्ज एवरेस्ट जब आपके यहाँ पर पोल्स पे पहुँचे थे एंड ही टुक वन ऑफ द पेंडुलम विथ हिम, और उन्होंने पेंडुलम को रखा और पेंडुलम को उन्होंने क्या किया, दिस इज़ पर्टिकुलरली योर पेंडुलम. सो दिस इज़ द पेंडुलम. सो उन्होंने क्या किया पेंडुलम को वहाँ ले जाकर हिलाया. ओके, सो पेंडुलम को हिलाने के बाद क्या होता है, अगर वो मास बिल्कुल सेंटर पे कंसंट्रेट होता तो पेंडुलम वुड बी लाइक दिस पर्टिकुलर. पर उन्होंने देखा कि पेंडुलम ऐसा नहीं, आपका हल्का सा क्या हो रहा है, रेदर देन पेंडुलम पॉइंटिंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, पेंडुलम यहाँ पर आ रहा है. सो ही थिंक कि आपका जो इसका जो एंटायर मास है ऑफ योर ट्रांस हिमालयस इज नॉट कंसंट्रेटेड, क्योंकि अगर होना चाहिए था कहाँ पे, इसका सारा का सारा मास यहाँ पे होना था, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा वेट कंसंट्रेट होना चाहिए था. बट यहाँ पर और इसका वेट कहाँ पर आना था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है, बट उसका उन्होंने जब देखा पेंडुलम को तो पेंडुलम इज़ नॉट हियर, पेंडुलम इज़ पॉइंटिंग समवेयर हियर, कुछ ऐसा कर रहा था. एंड फ्रॉम देयर ही गेट कि आपका जो ये पर्टिकुलरली जितने भी हिमालयाज़ हैं, सो इसका जो वेट है वो इसके ऊपर ओवरलाई कर रहा है, मतलब इसका पूरा का पूरा वेट इसके ऊपर झुका हुआ है. ठीक है, आपका ट्रांस हिमालयस के ऊपर ये वाला पूरा पूरा इसका वेट है, मिडिल हिमालयस का वेट इस तरफ कहीं देखने को मिल रहा है, और पर्टिकुलरली ऐसा करके आपका सॉरी आपको मिडिल के बाद नाउ दिस पर्टिकुलर देयर इज़ योर शिवालिक. सो शिवालिक हैज़ इज वेट लाइंग ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन. तो आपका क्या होता है वेट जो है आपका वो उसका सीधा नहीं है हिमालयस का, इट इज़ समथिंग लाइक दिस पर्टिकुलरली. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलरली ये जो था तो इसी से आपका क्या है कुछ इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ किए गए, ताकि उससे पता चल रहा था कि नहीं आपका इस चीज़ का वेट देख रहे हैं तो यहाँ दिख रहा है, बट इसका वो डिफरेंट दिख रहा है. एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग ही गॉट टू नो कि ये आपका किस तरह से सेक्शन है, और ये अलग अलग सेक्शन को डिज़ाइन किया गया. सो जहाँ जहाँ से ये क्या थे आपके सेक्शनल अलग अलग हो रहे थे. सो बिटवीन दिस पर्टिकुलर ये आपका तिब्बत प्लेटू एंड ट्रांस Himalayas and Greater Himalayas, then we have the Shivalik and Middle Himalayas, Greater Himalayas, Middle Himalayas, and after Shivalik, if you see, after Shivalik क्या आएगा आपका Northern Plains of India आएगा. ठीक है, North Plain of India. So we have the your Northern Plain of India और the Ganga Plains. ठीक है, so आपका क्या होगा Ganga Plains. Seeing this particular thing, फिर क्या हुआ यहाँ से उसको different ये जो बीच के जो एरिया हैं, this particular gaps are called as your faults. ठीक है, तो ये क्या है आपके डिफरेंट फॉल्ट्स हैं, और उसके बाद इन सारे फॉल्ट्स के नाम दिए गए. सो व्हाट दिस ऑल फॉल्ट्स आर कॉल्ड. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर तिब्बत प्लेट्यू, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर तिब्बत प्लेट्यू इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर तिब्बत प्लेट्यू, यहीं पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, दिस इज़ योर रिवर इंडस, एंड दिस पर्टिकुलर इज योर रिवर ब्रह्मपुत्रा, एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर इज कॉल्ड एज योर सेंगपो रिवर. सो दिस पर्टिकुलर लाइन Tibet and Trans Himalayas. So between your Tibet Plateau and your Trans Himalayas we have Indo-Sangpo Suchar Zone.
Okay, so we have Indo-Sanko suture zone. After this particular Trans-Himalayas and Greater Himalayas, here we have your main crustal thrust MCT. So यहाँ पर जो फॉल्ट उसका नाम क्या है? We have main crustal thrust. Okay, main crustal thrust between Greater Himalayas and Middle Himalayas. In this particular section, here we have your main boundary fault. Main boundary fault MBF. So this particular fault line, ये वाला पहला क्या है? Indo-Sanko zone. Then we have your main crustal thrust. Then we have your main boundary fault. Here between these two there is no fault. And after this particular Shivalik or this particular northern plain of India, here we have HFF, or it is called as your Himalayan. This is called as your Himalayan frontal fault. So these are the various fault present in your Himalayan mountain, which include Indus-Sanko suture zone fault. We have your main crustal thrust, we have your main boundary fault, and we have your Himalayan frontal fault between Shivalik and your northern plain of India. So there is one point where there is no faults. ठीक है, तो इस तरह से क्या है आपके सारे फॉल्ट्स डेवलप हुए हैं. सो होप यू विल अंडरस्टैंड कि आपका क्या है सारे हिमालयस के बीच अगर आपका देखा जाएगा ऊपर से नीचे, इफ़ यू सी लाइक दिस पर्टिकुलर, सो देयर इज़ अ गैप. यहाँ पर आपके सब में एक एक गैप है, एंड दिस गैप्स आर कॉल्ड योर वेरियस फॉल्ट्स, और ये फॉल्ट लाइन्स के नाम आपके अलग अलग हैं. सो समटाइम्स PPSC और द अदर एग्जाम्स विल आस्क योर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट लाइज बिटवीन विच ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑफ, किसके बीच होता है? योर ग्रेटर हिमालयस और योर मिडिल हिमालयस और शिवालिक हिमालयस, शिवालिक और नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, और द ग्रेटर हिमालयस और द ट्रांस हिमालयस. सो आंसर वुड बी हिमालयन फ्रंटल फ्रंट. सो इट इज़ योर शिवालिक एंड योर नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में कम. सो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. एंड दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमालय. सो इफ द क्वेश्चन ऑल्सो कम्स राइट अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ हिमालय. सो रेदर देन राइटिंग कि हिमालय क्या है, बैरियर एंड ऑल है, ये वो क्या है आपके ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, वेदर द क्वेश्चन इज अबाउट द फीचर्स, वेदर द क्वेश्चन इज अबाउट द सिग्निफिकेंस, वेदर द क्वेश्चन इज अबाउट द हिमालयन एज सच. ठीक है, सो दिस आर ऑल अबाउट योर वेरियस फीचर्स ऑफ योर हिमालय. सो दिस इज द फीचर ऑफ पर्टिकुलर हिमालयन माउंटेन. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके आगे देखते हैं अगला चीज़ फीचर्स के बाद. नाउ विल टॉक अबाउट द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय. सो विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय अंडर द फीचर्स. वन मोर थिंग इज लेफ्ट, आई टॉक दैट पर्टिकुलर इन द लास्ट सेक्शन. आपका पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, सो दिस पर्टिकुलर द फीचर्स में आपका क्या होगा, ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न हिमालयस में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर